हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर कोई वीडियो आपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने वही लोग वही बोरियत शख्सियात अपने बारे में आपके ऐसे ना सामने सोचा कर। वापस आ गए हैं और साथ आपके सामने एक मैं शुक्र कुछ कहने की इतना ही कहा है। शुक्र है इतना ही कहा है। मतलब अपने मुंह से मैं क्या कहूँ। थैंक यू अपनी बुराइयां करते हुए अच्छा नहीं लगता इंसान। एग्जैक्टली लोग जलते रहते हैं, जलते रहे, हमें क्या। हम ठीक है जी, ठीक है। सो आज हमने एक और सबक सीखा वीडियो के स्टार्ट होते साथ ही कि दाएं बाएं के लोग जो मर्जी कहें, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने अपनी फोकस रहना अपनी ज़िंदगी में और बिल्कुल दाएं बाएं, खास तौर पे बाएं तरफ बैठे हुए लोगों की तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। नहीं, मैं अपने बाएं की बात कर रहा हूँ भाई, मैंने टेंशन नहीं लेनी। तो मैं आप भी आपके देख लें, बाएं तरफ जो भी बैठा हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेकिन दाएं तरफ वाले की बात बड़ी सीरियस लेनी और बड़े ध्यान से सुननी। तो ये बात का लेक्चर पूरा हो गया, आज का सबक सीख लिया। हाँ, अच्छी बात, ये आज की अच्छी बात। और आज की अच्छी बात के बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे और खुद भी इंफॉर्मेशन लेंगे। वी होप हमारे लिए भी हाउ इंडिया रन्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन। ऐसे सो लेट्स सी द वीडियो। ऐसे नहीं, बड़ी मेहनत होती है इसलिए इलेक्शन में इतनी ज़्यादा आवाम है और फिर वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, इतने सारे लोगों को मैनेज भी करना होते हैं। आजकल तो गिनने नहीं पड़ते। ये बड़ा लेम किस्म का जोक मेरे ज़हन में आया था कि मतलब वो ये था कि मतलब बैंक में इतने पैसे होते हैं, वो गिनते कैसे होंगे। तू ये तो हो जाता होगा। तो कह रहा हूँ पर टिकट गिनने, वो वोट गिनने भी होते होंगे तो गिनने वाला होगा। तालियां यार, वेल डन। मतलब वो बंदा मुझे याद आ गया, वेल डन। मैं शायद देखा हो तो वही है। मैंने स्टार्ट में कहा था लेम जोक है, ठीक है, मैंने स्टार्ट में बता दिया था लेम जोक है, ठीक है, लेकिन अब आ गया तो वो ठीक है, वही जाने नहीं है ना। स्टेट ड्रामा वाले जोक ऐसे ही होते हैं ना, बस ठीक है, ठीक हो गया जी। हम देखते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन कैसे मैनेज होता है, कैसे रन होते हैं। सो लेट्स सी दिस वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो चुस्से मारता है ना, कोई भी नहीं सब्सक्राइब करेगा। लेट्स सी दिस वीडियो। कोई भी नहीं करेगा। देखते हैं। लेट्स सी द वीडियो। The world's biggest democracy just had an election. The world's biggest democratic election. Marathon election. A mammoth undertaking. The world's biggest exercise in democracy. In India, voters picked its central government for the next 5 years. An eighth of the world's population was eligible to vote in this election. This year, 2019, there are 900 million eligible voters in India, making this the largest democratic exercise in the history of humanity. But this isn't a video about Indian politics, because before India's people can even cast their vote, the election needs to come to them. Polling stations need to be set up wherever people live. And in one of the largest and most populous countries in the world, that isn't an easy task. India has to reach voters in coastal cities in the south, in the rural regions of the west, and jungles to the east, and everywhere in between. And what's more, they want every Indian citizen to be within 2 kilometers of a voting station. That's only about 25 city blocks, no matter where you are in the country. It's an incredibly ambitious goal, and yet somehow they're able to do it. This is the biggest election in the world, and I wanted to know, how does it work? Every election, a team of government officials and security forces get on a boat in the east of India to take off towards this island. They travel about 100 kilometers to get here, all to securely deliver these electronic voting machines, or EVMs, the instrument that logs India's votes, the heart of this elaborate election process. India has 2.3 million voting machines for its 900 million voters. So getting these machines close to every voter is a big logistical undertaking. That's why India doesn't have a single election day. Instead, it's closer to an election month with multiple phases that last weeks. This process takes more than 11 million election officials and security forces who move from polling station to polling station to polling station, from densely populated cities to the rural areas where the majority of Indians live.
Once on the island with the EVMs, officials pile onto bike carts and head towards the polling station. Once they arrive, they begin setting everything up for the vote. ওনাদের তো বহুত ধন্যবাদ যে এখানে এসে ওনারা আমাদের যে ভোটটা নিচ্ছেন। তাদের জন্য আমাদের তো খুবই শুভেচ্ছা ভালোবাসা রইল। আমার বক্তব্য সবার কাছে পৌঁছতে পারছি এই আর কি। On election day, voters line up, cast their vote, and get their fingers inked to prevent double voting. This is where the process ends for the voters. But for the election officials, this is just the beginning. Driving a boat out to a remote island is just one of many ways that officials reach every voter. India's vast and diverse terrain requires transportation methods of all kinds. Like in the jungles of this northern state, where elephants transport voting machines to reach a remote town, or in the Himalayas, where officials hike for hours to bring EVMs for election day. Helicopters, trains, they even use camels. But what makes India's elections so impressive isn't just how they reach everyone in such a big country. That's just half the battle. It's also the ways they try to include voters of all backgrounds into the process, a challenge that has been a part of India's elections since the very beginning. India has 22 official languages and hundreds of dialects. And when India became an independent nation, less than a quarter of the population could read and write. The newly formed Election Commission of India created a range of symbols to correspond to each political party, like an elephant, a lotus, a hand, or even an alarm clock. So that from the beginning, all people, regardless of literacy level and language, could vote with confidence. Since 1947, the literacy rate has increased significantly, but it's still only 75%, so these symbols are still useful to many when casting a vote. But this is a massive, sprawling operation, and over the years it's run into some pretty serious problems, like allegations of election rigging and problems with a practice called booth capture, where gangs actually take over polling stations and tamper with the elections. It's partly because of these problems that the Commission introduced these voting machines in the 1990s. It also increased security around the elections. These efforts to include all voters and protect elections seem to be working. In 2019, India saw the highest voter turnout yet, and for the first time, women voted just as much as men. ভোটটাই তো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট, কেননা আমরা এখানকার বাসিন্দা। ভালোর জন্য, উন্নতির জন্য। India's elections are only getting bigger and more complicated. India has one of the fastest growing populations in the world, and in 2020, young people will make up more than a third of the country. I voted for the first time since turning 18, and this is my indelible ink mark. Done with voting. So happy that I did my voting for the first time. Yes. This is the biggest election in the world. It takes millions of officials fanning out across a massive country to help hundreds of millions vote. Every part of this, the symbols, the elephants, the boats, the machines, shows how hard it is to make sure that everyone in a country this large can participate. And all without going more than 2 kilometers from home. If you want to learn more about the evolution of democracy in South Asia, you should check out the Bhutan episode of Asian Monarchies. It's a series of documentaries. Okay, so अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं। ये आई पर्सनली रिकमेंड दिस चैनल। ये चैनल वर्क्स बहुत अच्छा है डॉक्यूमेंट्रीज की। हमने पहले भी इसकी वीडियोस देखी हैं, कुछ काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है। ये इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बेस्ट हैं। ये मतलब हर किसी को ये यूज़ करना चाहिए। एक अच्छी सोर्स है इन्फॉर्मेशन की। एग्जैक्टली, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है।